Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Meet the Past. Acha, today's our topic is going to be about minor ministries. And Sir Hamza is going to explain why do we call it minor ministries. Okay. Walaikum assalam and thank you very much for this opportunity again. Minor ministries हम इसको इसलिए कहते हैं कि दो मेजर मिनिस्ट्रीज यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के दरमियान और मीन्स लियाकत अली खान और अय्यूब खान के दरमियान जो मिनिस्ट्रीज आई जिन्होंने शॉर्ट टर्म के ऊपर सर्व किया पाकिस्तान को, जिसमें गवर्नर जनरल्स भी रहे और वज़ीर आज़म की तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी कतार थी जिनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कम अरसे के लिए सर्व कर सके। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि हमने अपनी आखिरी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि लियाकत अली खान की डेथ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ होने वाले मसाइल। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने दोनों ऑफिसेस सर्व किए। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे नॉर्मल जो हमारे ऑडियंस हैं उनके लिए भी एक परेशानी का बायस होता है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एक्चुअली थे क्या। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जिन्ना के मरने पर गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान को जब गोली मारी गई तो उसके बाद फिर अचानक से सिचुएशन क्रिएट हो गई कि एक सीनियर पॉलिटिशियन रिक्वायर्ड था जो पाकिस्तान की हुकूमत को लीड करे। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की सूरत में नाम सामने आया और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। अरे अच्छा सर, यहाँ पे मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के कोई सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स नज़र नहीं आते, कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नज़र नहीं आती कि शायद वो ओवरशैडो हो जाते हैं अंडर द पर्सनालिटी ऑफ लियाकत अली खान, कि जिस तरह से जिन्ना की पर्सनालिटी और उनकी डेवलपमेंट के अंदर ओवरशैडो करती है लियाकत अली खान को, वैसे लियाकत अली खान was more prominent as compared to ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। सो सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि लियाकत अली खान के हैं वही हम शेयर करते हैं ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की मिनिस्ट्री में भी। लेकिन सर मैं इससे थोड़ा सा आपको आगे लेके चलूँगा। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कैसे आते हैं, खड़े होते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे गवर्नर जनरल बना दो और आप बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मली जो आपकी पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग द गवर्नमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द फाइनेंस मिनिस्टर एंड मलिक ग़ुलाम मोहम्मद का जहाँ तक ताल्लुक है तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद इज नोन टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स डिस्पाइट a lot of things that he had in his personality being very aggressive and even abusive at times, right? And गवर्नर जनरल हाउस में मज़ेदार बात ये थी कि मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के सुबह उठने का पता ही इस बात से चलता था कि किसी न किसी स्टाफ की गोशमानी हो रही होती थी और उसके अंदर बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल होता था। तो ऑब्वियसली ही वाज वेरी अब्यूजिव एंड वेरी एग्रेसिव बट ही वाज अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को जैसे आपने कहा कि ही वाज अ बेनाइन पर्सनैलिटी because if you look at the hierarchy, Jinnah, Liaquat Ali Khan and then Khwaja Nazimuddin, so it was easy for Ghulam Muhammad to pursue Khwaja Nazimuddin to become the Prime Minister of Pakistan and he to become the Governor General. Now, अब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के साथ एक ट्रेजेडी ये रही कि जब वो गवर्नर जनरल थे तो लियाकत अली खान डोमिनेट कर रहे थे और उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली हम मलिक ग़ुलाम मोहम्मद के एस्पेक्ट पे देखेंगे। However, he was also dismissed by Malik Ghulam Mohammad just in 1 year, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, and that was 2 years, 1953. All right, that became a bigger issue for the East Pakistani. Obviously, one of the Bengali person who was the governor general first and then the prime minister, and he was dismissed by Malik Ghulam Mohammad. So Malik Ghulam Mohammad did, I believe, face a lot of opposition on that matter as well. Let's come to the success and the failures of Malik Ghulam Mohammad, considering our students as well, and the question that never came about Malik Ghulam Mohammad particularly. So I call them minor ministries because इनका 14 मार्क इंडिविजुअल नहीं आता। Exactly. तो बहुत से बहुत आएगा तो मलिक ग़ुलाम मोहम्मद, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और इस्कंदर मिर्जा पे कंबाइन आता है। Yes, तो ये absolutely. उनकी comparisons और अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि an essay length question that is obviously a 14 mark question will not be set on the individual personalities. Right? So with that makes it obvious कि इन तीनों के ऊपर मिला। अगर हम इतनी एकेडमिक बातें करेंगे तो हमारे नॉन स्टूडेंट्स हैं जो जनरल ऑडियंस है शायद उनको जो है ये बातें absolutely. So moving on to the successes, I believe कि among the minor ministries, Malik Ghulam Mohammad is equally contributing just like Liaquat Ali Khan. उनकी बहुत ज़बरदस्त सक्सेसफुल है, maybe more सक्सेस, yes,
बहुत ज़बरदस्त सक्सेसेस हैं, जैसे कि लेट मी काउंट डाउन, राइस मिल्स पाकिस्तान के अंदर डेवलप करने वाले, व्हीट मिल्स डेवलप करने वाले, शुगर केन मिल्स डेवलप करने वाले, जूट मिल्स डेवलप करने वाले। Exactly. पाकिस्तान ने इनके टाइम पे एक्सपोर्ट करना शुरू किया, एक खुद कफील कंट्री की तरफ एक रास्ता शुरू हुआ। लेकिन अगर आप जूट मिल्स की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि जो जूट मिल्स डेवलप हुई वो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान में नारायणगंज में हुई, और नारायणगंज की खास बात ये सर कि पंजाबी सेटलर एरिया था। सर मेरा ख्याल है अभी एथनिसिटी को साइड पर रख के बात करते हैं, जनरल पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पार्ट को बेनिफिट हो रहा है, पाकिस्तान को तो बेनिफिट हो रहा है अल्टीमेटली। सर ऐसे आज भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। Sir, let's have another day for this discussion as well. Sure. Okay, now 5-year economic plan जो कि पाकिस्तान कहाँ से पैसे अर्न करेगा और कहाँ पे स्पेंड करेगा। 6-year डेवलपमेंट प्लान के कौन से प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में जाके पाकिस्तान में अगले 6 साल में एग्जीक्यूट होंगे। फिर इनके टाइम पे फाइंड हो जाती है नेचुरल गैस, पहले पोटवार प्लाटू से और फिर सुई के मकाम से। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट, आप इसको लक बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल पावर रिक्वायरमेंट और डोमेस्टिक पावर रिक्वायरमेंट का मसला ही सॉल्व हो जाता है, और पाकिस्तान एक एनर्जी डेफिसिट कंट्री से एक ऐसी कंट्री बन जाता है जिसके पास पावर सेल्फ सफिशिएंट पावर जनरेशन। और ये जो हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं ना कि हमारे पास गैस के ला महदूद ज़खायर है, तो ये 1951-52 के हिसाब से गैर महदूद ज़राए वसाइल थे। अब शायद ऐसा नहीं है। इसका प्राइमरी रीजन यहाँ पे मैं हाईलाइट करता चलूँ, परवेज मुशर्रफ ने एक स्कीम शुरू की थी CNG। एग्जैक्टली। और मेरी गाड़ी के पीछे स्टिकर लगा होता था आई एम एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एक्चुअली हमें CNG डाल के अगले 50 साल की जो गैस है वो उसको वैसे ही। असल में हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि बेसिकली जो आपकी नेचुरल गैस होती है वो केमिकली मीथेन होती है। तो जब इसको कंप्रेस करते हो तो इट बिकम्स CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जब इसको आप लिक्विफाई करते हो तो दैट्स कॉल्ड LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। LPG एक अलग चीज होती है। ओके, खैर एनीवे, आप इस चीज में ऐड करूंगा कि जो आप सक्सेसेस की बात कर रहे हैं, ये वो दौर था जिसमें हम कहते हैं कि वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के दौर में सरप्लस बजट्स प्रोड्यूस हुए। आपको पता है कि सरप्लस बजट्स प्रोड्यूस करने में किस चीज़ ने पाकिस्तान की मदद की है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन अचानक से इतने क्राइसिस से निकलता है पाकिस्तान, लियाकत अली खान की डेथ के बाद ये वज़ीर आज़म बनते हैं और 2 साल लगातार सरप्लस बजट प्रोड्यूस होता है। सर एक मूवी थी गोस्ट प्रोटोकॉल, मिशन इम्पॉसिबल 4, उसमें एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि वॉर इज़ गुड फॉर बिजनेस। 1951 में अगर आपको याद हो तो कोरियन वॉर स्टार्ट हुई जी, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त अब US एलाई था, और US अलायंस के जो सबसे बड़ा तोहफा पाकिस्तान को मिला वो कोरियन वॉर में जितनी भी कॉटन और जूट की रिक्वायरमेंट थी वो पाकिस्तान के जरिए पूरी हुई। तो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 2 साल ऐसे हैं जिसमें आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव रहा है, और ये वो 2 साल है जिसमें ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और मलिक गुलाम मोहम्मद जो थे वो उस वक्त गवर्नर जनरल थे। तो अब आप इसका क्रेडिट जो है वो अमेरिका को दें, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को दें, मलिक गुलाम मोहम्मद को दें, या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग को दें। सर माय पॉइंट हियर इज कि आप क्यों बार बार इंटरनेशनल सिचुएशंस को और इंटरनेशनल इवेंट्स को, यू आर अ मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आई एम अ मास्टर्स, नॉट एवरी टीचर इज। सर पाकिस्तान स्टडीज वालों को पाकिस्तान स्टडीज में रहना, लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अप्रिशिएट, हमारे बाकी के टीचर्स को भी इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान एक ऐसा हॉट केक है कि एवरीबडी वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ऑन पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। और इसका मेजर वजह ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए रीजन में, इसमें इंडिया का नॉन अलाइन होना, उसके बाद फिर ईरान में इस्लामी इनकलाब आ जाना जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट कर लिया। तो पाकिस्तान की अहमियत जो है, पाकिस्तान की इस वार्म वाटर पोर्ट की फ्रॉम गवादर टू बदीन, ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, और इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये बात and this is to add another point here is this is the why in our syllabus as well international relations is also covered. Yes, it is covered. So, and for your kind information, the change that we are having in the upcoming syllabus, geopolitical situations of Pakistan and the role of Pakistan in the international politics will be a major part. And let's see how people are able to. आप जोर से सबको स्कीम बता दें। सर मैं स्कीम नहीं बता रहा हूँ, अब तो कैमरेज ने अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया है। सर बहुत सारे हमारे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हमारे ऐसे टीचर्स के जो सिर्फ आप एक सिंगल बुक के ऊपर डिपेंड करके और थोड़े से नोट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करके चल रहे हैं, जिनकी बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, उनको बहुत
tough time मिलेगा. They Best will labor work hard and they will do it. I'm very hopeful Absolutely. that every one of them is going to. Let's talk about, sir, let's talk about the crisis during Malik Ghulam Muhammad's time. What I believe and what I teach to my students in a 7-marker question, that there were food shortages due to Indus water problem And a drought as well. and a drought as well. 2 years of rainless, rainless years. There was no rain and wheat and rice could not be cultivated during that time. तो फूड शॉर्टेज के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि लोगों के क्या हालात थे. उसकी वजह से ऑब्वियसली लोग बाहर आ रहे थे और एहतजाज कर रहे थे. एक वो प्रॉब्लम था. दूसरा सर बड़ा प्राइमरी प्रॉब्लम बंगाली लैंग्वेज इशू 1952. ये बिल्कुल फ्रेश था और 1956 तक मलिक गुलाम मोहम्मद ने जब तक क्योंकि इनका कोई रोल नहीं था इसको रिजॉल्व करने में, तो बंगालीज वर एक्चुअली गिविंग अ वेरी टफ टाइम टू मलिक गुलाम मोहम्मद. 55 to be precise. एब्सोल्युटली. कॉन्स्टिट्यूशन केम इन 56, तो तब तक उनका टेन्योर खत्म हो चुका था. अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू पर्टिकुलरली is about the movement against Qadianis. Now, my question over here is, sir, कि Qadianis and other communities like Ismailis or Aga Khanis, they played a significant role in the creation of Pakistan. Then why, right after the creation of Pakistan, the Sunni, I would say, the Sunni populace or the Sunni majority population started declaring all of these sects out of Islam based on their concepts? I would like to correct few things over here. Other communities like Boris, Ismailis, and any other community is very different from the Qadiani community. The Ismailis, Boris, they do not conflict. They do not have any conflict on the finality of the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They were never there. There has never been a dispute over them to be Muslims or not. Right? They are considered the Shia Muslims in Pakistan, and nobody has ever tried. लाज़िम है कि उनका ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन है. और कादियानियों का प्रॉब्लम ये है कि कादियानी जो हैं वो कादियानी, अहमदी, लाहौरी, परवेज़ी, ये तमाम ग्रुप्स जो हैं ये फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इनको डिस्प्यूट है. तो द कादियानी क्राइसिस इज समथिंग entirely different. You cannot equate it or you cannot put it in the same line as any other sectarian difference. Sectarian difference is something else. But the Qadiani issue is something entirely different. And all the other sects are united against Qadiani. Yes, they are. Due to this fundamental belief, sir. But यहाँ पे अगर हम रोल देखें, Zafrullah Khan साहब, I was just recently watching one of the clips from how he presented Pakistan and Palestinian cause in the United Nations. He seems very capable. Then Dr. Abdul Salam, the only Nobel Award winner of Pakistan. Okay? Don't you think, despite the differences, Qadianis also had a role and contributions in the development of Pakistan? But Anqi, the point over here is that a country made in the name of La ilaha illallah, Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. And obviously La ilaha illallah is never alone. It is always with Muhammad Rasulullah. Right? So anybody who is not accepting this fundamental belief, no matter how good and how well equipped that person is in his particular field, do you really think that he should be representing Pakistan? Not at all, sir. Okay. This might pick up a lot of controversies. Absolutely. Because a lot of people will not agree to this point. But the thing is that the country made in the name of Islam and the country made in the name of establishing the Sharia law in the country, although we were not able to do it, but does it have any room for a community that goes against the basic fundamental of Islam and not accept the finality of the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So I don't think that is any point in protecting. Like, obviously, I'm not here to protect any further community. I was just their counting their contributions are there, right? There are a lot of other non-Muslim communities that have contributed to Pakistan's development and they should be appreciated. Initial build-up of Pakistan. The entire, the majority of the pilots in the Pakistan Air Force, as we already discussed earlier, were Christians, and a lot of Christians. That does not Hindus, Christian, and everybody. So, Sir Zafrullah का जहाँ तक ताल्लुक है, आपने बड़ी important personality का नाम लिया, उसके बाद Dr. Abdul Salam का नाम भी लिया आपने. The basic blame on Sir Zafrullah was that since he was a foreign minister of Pakistan, the different foreign offices of Pakistan were used as a hub of promoting the Qadiani faith across the world in the name of Pakistan. So it became a
situation that the religious elements in Pakistan decided to come on the streets and force the government to dismiss it. All right, sir. Sir, let's move on to मैंने आपको तीन इनके क्राइसिस बताए जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल हुआ होगा. मगर ये डाउनफॉल प्रोसीड कैसे किया? क्या रीजन बना कि मलिक गुलाम मोहम्मद ने पावर ट्रांसफर कर दी सिकंदर मिर्जा? देखिए, दो फैक्टर्स हैं. एक तो मलिक गुलाम मोहम्मद को पैरालिसिस हो गया था. Oh yes. Malik Ghulam Muhammad fell seriously ill and he was unable. The only part of his body that was working was his tongue, basically. Right? Otherwise, he was on bed. और वो लाज़िम थे कि बीमार थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे. तो he was not in a position to lead. Number one. Number two, the politically aware East Pakistan, as usual. Right? They were not very happy with Jinnah as well. They were not very happy with Liaquat Ali Khan as well. So they were also very aggressive. And obviously, when they were denied in the provincial assembly elections, the United Front was not allowed, and the United Front was dominated by Awami League once again. So, वो जो grievances थी, वो pile up होना शुरू हुए, और eventually Malik Ghulam Muhammad, I think he took a safe passage under the cover of his illness, and he handed over the situation to Iskandar Mirza. How do you see Iskandar Mirza as the third Governor General of Pakistan, fourth Governor General of Pakistan? And sir, I see these people selected, not elected. Yes, they were. Obviously. Sir, unfortunately, इंडिया को मेरे ख्याल है 2 साल लगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में, जो आज तक इंटैक्ट है, 2 से 2.5 साल. पाकिस्तान को 9 साल लगे. वो जो 9 साल का ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम बच्चों को बताते हैं और हम जो एक्सप्लेन करते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी अगर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो जाता. सो अगेन one of the disadvantages of not having a constitution was Iskandar in form of Iskandar Mirza. Now, Iskandar Mirza, I believe, was a military personnel, retired from British service, and he could be a bridge between the Indian-led British-led Indian army and Pakistan-led British army. See, you have to understand one point over here. When Iskandar Mirza took over, Pakistan was still a dominion country. Pakistan was not a sovereign state. Absolutely. सर यहाँ पे डोमिनियन जरा बताते चलें बिकॉज बहुत सारे. अच्छा, डोमिनियन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो तमाम इंपीरियल कंट्रीज के, इनफैक्ट ब्रिटेन की जितनी भी होल्डिंग कॉलोनीज थी, जब उनको लिमिटेड आज़ादी मिलती है तो उनको सोवरेन स्टेट का दर्जा नहीं मिलता है. उनको मिलता है हेड ऑफ द स्टेट. अच्छा, अब उसके अंदर जो है वो आपकी मर्जी होती है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के सोवरेन होना चाहें, आप हो जाए. और अगर आप जो है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का डोमिनियन मेंबर रहना चाहते हैं तो आप ये भी रह सकते हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है. सर, दुनिया में 13 ममालिक ऐसे हैं जो आज भी डोमिनियन स्टेटस एंजॉय करते हैं. दे डू नॉट हैव अ प्रेसिडेंट, दे स्टिल हैव अ गवर्नर. यस. तो एंड द क्वीन इज स्टिल हेड ऑफ द स्टेट, यानी द ब्रिटिश मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट. तो 1955 में जब सिकंदर मिर्जा ने टेक ओवर किया तो उस वक्त पाकिस्तान वाज अ डोमिनियन स्टेटस, इंडिया वाज अ सोवरेन कंट्री. So, the British Indian Army's officer, retired senior officer, had to actually work as a bridge between the Pakistani administration and the monarch, which was the head of the state. Even Jinnah was answerable to the Queen. Liaquat Ali Khwaja Nazimuddin was answerable to the Queen because of that dominion status. All right. Situation. Very understandable. So, thank you for explaining this. Sir, what do you think are the positives of Iskandar Mirza's government? He worked tirelessly for the development of the Constitution of Pakistan. Do you think he was the one we can count as a sincere leadership among sincere leadership? It's like the goal in football, right? All right. The finisher. Yes. He finished it. He finished the job. Like, he is the one who's given the credit. He was the first president of Pakistan. Although that constitution could not last for even 2.5 years. And he himself dismissed that constitution. Exactly. So, yes, there are few things, and then obviously Pakistan's geopolitical situation again comes into play, and Pakistan was a part of 2 very important wartime alliances in which Pakistan had to gain nothing. That's very interesting. SEATO and CENTO. Yes. Okay. So SEATO and CENTO was contributed to Malik Ghulam Muhammad, if I'm not wrong. But it was towards the end of Malik Ghulam Muhammad's. Yes. So we can give contribution more thing that Iskandar Mirza as well. Yes, sir. At the local front, at the domestic front, the one unit scheme. The one unit scheme, the mighty one unit scheme. Now, I would like to put a light on one unit scheme first.
So 1 unit scheme, I believe, was an excellent formula. देखो, right? The East Pakistanis were 56%. The West Pakistanis, all 4 provinces, were 44%. Now, the East Pakistanis wanted more power in the government and extended share. So there was only one safe way out of this crisis was 1 unit scheme. Give 50% share of power to East and 50% to the West. If, for suppose, the Governor General or the President is going to be from the East, the Prime Minister must be from the West, and vice versa. So I believe that it was 1 unit scheme actually, which united Pakistan for some time, Really? and it was there for 15 years Really? during Ayub Khan's time. And when LFO, when Yahya Khan later removed this 1 unit scheme, Bengalis got more seats and Pakistan was broken. I strongly believe कि बांग्लादेश के बनने की बुनियाद, पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान के टूटने की बुनियाद was the first and the most important thing was the 1 unit scheme. इसके ऊपर हम अलग एपिसोड में बात कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त पॉइंट ये है कि आपके ख्याल में कि 50% और 50% दोनों फैक्शंस को दे दिया जाए, ईस्ट पाकिस्तान के पास 50%, आप मुझे बताइए कि अगर आप 44% हैं तो आप किस बुनियाद पे 50% डिमांड करेंगे, और अगर आप 56% हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपको कन्विंस करेगी कि आप अपना ड्यू शेयर छोड़ के 50% पे एग्री करें। ये चीज़ ग्रेडियंस का सबब बनी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इवन हमारा मज़हब, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम एज अ पॉलिटिशियन, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एंड वी सी हिम एज समबडी हु हैड द आर्ट ऑफ डेवलपिंग दी स्टेट्स। तो अकॉर्डिंग टू हिज सेइंग एज वेल, establish smaller provinces and smaller administrative units. दुनिया अपने नए सूबे बनाती है। इंडिया ने 1947 में आज़ादी के वक्त 28 सूबे थे, इस वक्त शायद 41 हैं। इंडिया ने छोटे सूबे बनाए, हमने जो सूबे मौजूद थे उनको क्लब करके एक बड़ा सूबा बना दिया। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो हमारे अकाबरीन थे उस वक्त थे, उनका ये कहना था कि सिंध खत्म, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व, केपी के जो उस वक्त एनडब्ल्यूएफ था डिसॉल्व, एंड बलूचिस्तान को डिसॉल्व करके एक 1 unit बनाने से पेट्रियोटिज्म बढ़ेगा। जो आने वाली जनरेशंस होंगी वो अपने आप को सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान कॉल नहीं करेंगी, बल्कि आज अगर ये ऐसा होता भी है तो आने वाली लोग अपने आप को पाकिस्तानी कॉल करेंगे। सो एक ये ऐसा दूसरा रीज़न सर, दूसरा रीज़न यहाँ पे मैं आपसे डिबेट कर सकता हूँ इस बात के ऊपर कि सर देखिए, हमारी कितनी प्रोविंसेस हैं? ज़्यादा प्रोविंसेस बनाने से पाकिस्तान का बहुत सारा बजट इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ऊपर लगता है। जब आपने उसको 1 unit बना दिया तो वो सारा प्रोविंशियल बजट बच रहा था, राइट? और तीसरी बात ये कि सर ये जो पावर स्ट्रगल थी, ये इसको फुल स्टॉप लगाना था, क्योंकि पंजाब के लोग ये समझते थे कि उनके पास ज़्यादा पावर शेयर होना चाहिए, सेम विद सिंध, सेम विद केपीके एंड बलूचिस्तान। सो ये जब मिलके 1 unit बन गया तो आप सोचे कितना ज़्यादा खर्चा पाकिस्तान ने इस सूरत में अपना बचाया। आपने फॉर के पॉइंट्स दे दिए, मैं आपको अगेंस्ट के पॉइंट देता हूँ। 1 unit स्कीम का कॉन्सेप्ट ये था कि पेट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट आए, रीजनलिज्म खत्म हो, नेशनलिज्म आए। देखिए, आप जो है वो किसी के दिल से उसके इलाके की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। ईस्ट पाकिस्तान तो एक ज़बान, एक कल्चर, एक माइंडसेट। वेस्ट पाकिस्तान मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल ज़बानें, मल्टीपल माइंडसेट्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की बात की, तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप छोटे सूबों में डिवाइड करते हैं तो आपका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा ईजी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ईजी हो जाती है, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ टू पीपल बिकम मोर ईजियर बिकॉज यू हैव स्मॉलर यूनिट्स टू एडमिनिस्टर। इसका फ़ायदा क्या होता है कि लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, आप पाकिस्तान में ट्रैवल करते रहते हैं, आपकी तस्वीरें और आपके व्लॉग्स हम देखते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या छोटे सूबे बनाने की सूरत में हम उन पाकिस्तानियों को जो बिल्कुल उतने ही पाकिस्तानी हैं जैसे कराची, लाहौर या पेशावर में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उनको हम ज़्यादा बेहतर सहूलियात दे सकते हैं, हम उनसे टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं और हम पाकिस्तान को एज अ बेटर यूनिट चला सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इग्नोर कर दी, इसमें वो 10 ट्रांसली स्टेट्स भी शामिल थी जिनको जिना ने ये एश्योरेंस दी थी कि आप पाकिस्तान के साथ 99 साल की लीज पे हैं और आपकी स्पेशल पोजीशन और स्टेटस को कोई टच नहीं करेगा। और विद इन 8 years पाकिस्तान ने उनको सॉल्व कर लिया और अपने अंदर एमैलगमेट कर लिया। ये 1 unit स्कीम पे हुआ था, स्कीम पे हुआ था। आपने उनकी जुदागाना हैसियत को ख़त्म किया, आपने उनकी
बैंक्स को ख़त्म किया, आपने उनकी करेंसी को ख़त्म किया, आपने उनके वज़राए आज़म को ख़त्म किया, आपने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया, आपने उनकी फ़ौज और उसकी वर्दी को ख़त्म किया. तो वन यूनिट स्कीम बेसिकली led to grievances in Pakistan, not only East Pakistan but also in West Pakistan. तो इसके ऊपर हम बहुत अच्छी हमने मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर वन यूनिट स्कीम को बहुत अच्छे से हम इस पे डिस्क्राइब कर सके. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट अदर अचीवमेंट्स ऑफ इस्कंदर मिर्जा. what else do you think about the achievements of Iskandar Mirza? सर अचीवमेंट्स तो मैं ज़्यादा फोकस हाईलाइट नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन नेगेटिविटी अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो आई बिलीव इस्कंदर मिर्ज़ा वाज द फर्स्ट वन who introduced martial law and gave that power to the army to run the affairs in Pakistan. देखिए, before he did that, Iskandar Mirza also changed a number of prime ministers. Yes. Means that showed that Iskandar Mirza did not have that confidence in his own constitution and the way of governing Pakistan as he was pretending. देखिए, इसमें आइए चौधरीगढ़ की हुकूमत भी शामिल है ना, यानी कि 6 हफ्ते की हुकूमत जिसमें 5 हफ्ते और 3 दिन जो है वो पूरी प्राइम मिनिस्टर इनके केयर टेकर और 3 दिन एज अ फुल फ्लेज प्राइम मिनिस्टर. और जिस दिन इसका आई चौधरीगढ़ की हुकूमत डिसमिस हुई थी उस दिन जंग अखबार ने हेडिंग लगाई थी आई चौधरीगढ़ गई चौधरीगढ़. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म का मजाक चल रहा था, और इस मजाक के पीछे ऑब्वियसली एक नॉन इलेक्टेड और सेलेक्टेड आदमी इस्कंदर मिर्जा मौजूद. Yes. Sir, I.A. Chandigarh, Feroz Khan Noon, H.S. and Bogra. The first one was Bogra. He replaced Bogra first. So 2 साल के अंदर 4 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर एक शदीद रिजेंटमेंट मिलती है इस्कंदर मिर्जा को, और वो हालात को कंट्रोल नहीं कर. और इसके ऊपर आपके पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म का इंतहाई डेरोगेटरी रिमार्क आया पाकिस्तान के लिए कि मैं जितना लिबास तब्दील नहीं करता, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म तब्दील करता है. सर बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई. बट इट वाज अ मॉकरी ऑफ पाकिस्तान. Absolutely. So, as compared to Malik Ghulam Mohammed, I would never say कि इस्कंदर मिर्जा was more successful because सिर्फ जब वो हालात को खुद सिविलियन गवर्नमेंट संभाल नहीं सकी, तो अयूब खान को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आए जनाब और संभाले जनाब, और वज़ीर आज़म बने. नहीं वजीर आजम की, और आपके लिए ये बड़ी चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है. आपके लिए एक नई न्यूज़ होगी कि ये जो वज़ीर आज़म की म्यूजिकल चेयर चल रही थी, इसमें एक दफ़ा इसमें थोड़े से अरसे के लिए अयूब खान भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बराजमान हुए. अच्छा. And that paved the way for the army to believe that if they have to control the country directly or indirectly, so why not to do it directly? Yes. And that led to the military rule starting in October 1958, which lasted for nearly 10 and a half years and ended on 25th March 1969. Absolutely. So I think यहाँ पे थोड़ा सा हम मेन इवेंट को एड्रेस किए बगैर आगे नहीं चलना चाहिए हमें, इस्कंदर मिर्जा का मेन इवेंट, बिकॉज अयूब खान के लिए हमें एक अलग पॉडकास्ट करनी है या शायद मल्टीपल पॉडकास्ट करनी है, क्योंकि उसमें मेरे पास आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें एंड आई नो योर नरेटिव. सो सर इस्कंदर मिर्जा साहब जो है वो अयूब खान को रिक्वेस्ट करके, अच्छा मुझे यहाँ पे एक बात थोड़ी सी क्लियर करें, फिर मैं अपना पॉइंट देता हूँ. सर अयूब खान इस वक्त तक चीफ मार्शल आर्मी चीफ कैसे बैठे हुए हैं? आर्मी चीफ का टेन्योर तो 3 साल का होता है. एक्सटेंशंस नहीं. आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के टेन्योर का तायुन जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन. के कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूरेशन का कोई खास तायुन नहीं था. इट डिपेंडेड अपॉन द पर्सन इन द सर्विसेज दैट ही हैड रेंडर्ड फॉर पाकिस्तान. सो कमिंग टू द पॉइंट सर, इस्कंदर आपका थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दूं कि एक्सटेंशन से मुराद ये कि मैं आपकी तरह मुलाजमत नहीं बढ़ा रहा, मैं इस बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि आई थिंक रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी को डिफ्यूज करना अयूब खान की का इतना बड़ा काम तो था कि जिसके ऊपर अयूब खान तरह ज़्यादा अरसे तक कमांडर इन चीफ. अच्छा सर, मैं यही बता रहा हूँ कि गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स दर्जनों के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अयूब खान अपनी जगह मौजूद है यहाँ पे. अच्छा सर, अयूब खान को इनवाइट किया जाता है इस्कंदर मिर्जा की तरफ से कि भाई मुझसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे और आपको संभाल लें. जब वो संभालते तो शायद अयूब खान को ये ख्याल आता है कि जब मैं ही संभाल रहा हूँ तो क्यों ना मैं ही संभाल. एंड देन ही डिसमिस्ड, ही फोर्सफुली आस्क्ड इस्कंदर मिर्जा टू रिजाइन फ्रॉम पावर. एंड जब पाकिस्तान एक
ऑल ऑफ अ सडन एक दिन पाकिस्तान 27 अक्टूबर को जब सो के उठता है तो पता लगता है कि सिकंदर मिर्जा उनकी वाइफ जो है वो यूके रवाना हो चुके हैं ऑलरेडी. तो प्रेसिडेंट वाज नॉट प्रेसिडेंट इन द कंट्री. और पाकिस्तान की फिजाओं में एक जुमला गूंज रहा था और वो था मेरे अजीज अहमद. मेरे अजीज अहमद. Sir, it was really nice talking to you today. Thank you very My much, ministries Abdul. were very well covered. I hope it will be very helpful for our students and for the general public. Thank you so much for your time, sir.